हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स चैप्टर से क्वेश्चन फॉर नीट चौका नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। द ड्रिफ्ट करंट इन ए पीएन जंक्शन इज 10 माइक्रोएम्पियर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शन per second in the depletion region. 6.2 into 10 to the power 13, 3.1 into 10 to the power 13, 1.6 into 10 to the power 13, 8.0 into 10 to the power 12. Question number 2. Calculate the current through the circuit and the potential difference across the diode shown in the figure. The drift current for diode is 20 microampere. ऑप्शन है 20 माइक्रोएम्पियर एंड 4.996 वोल्ट, 0 एम्पियर एंड 5 वोल्ट, 10 माइक्रोएम्पियर एंड 2.5 वोल्ट, 0 एम्पियर एंड 0 वोल्ट. Question number 3. Each of the resistances shown in the figure has value of 20 ohm. Find the equivalent resistance between A and B. ऑप्शन है 40 ओम, 10 ओम, 30 ओम, 20 ओम. Question number 4. Find the current through the resistance R in the given figure if R is 12 ohm and R is 48 ohm respectively. ऑप्शन है 0.42 एम्पियर, 0.42 एम्पियर, 0.42 एम्पियर, 0.16 एम्पियर, 0.16 एम्पियर, 0.42 एम्पियर, 0.16 एम्पियर, 0.168 एम्पियर. Solution. Question number 1. The drift current in a PN junction is 10 microampere. Estimate the number of electrons crossing the section per second in the depletion region. 6.2 into 10 to the power 13, 3.1 into 10 to the power 13, 1.6 into 10 to the power 13, 8 into 10 to the power 12. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज n इलेक्ट्रॉन्स अगर एक डायरेक्शन में चलते हैं तो उन्हीं के इक्वल नंबर के होल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं फॉर ड्रिफ्ट करंट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, number of holes n, total charge flow per second. 2n नंबर फ्लो कर रहे हैं. होल पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. तो टोटल चार्ज फ्लो हो गया माइनस 19. दिस इज चार्ज कूलाम पर सेकेंड. जो चार्ज फ्लो पर सेकेंड इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट 10 माइक्रोएम्पियर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, और n is equal to 10 into 10 to the power minus 6 by 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 10 by 3.2 into 10 to the power 13 or 3.1 into 10 to the power 13. So number of electron crossing a cross section per second is 3.1 into 10 to the power 13. B is correct option. Question number 2. Calculate the current through the circuit and the potential difference across diode shown in the figure. The drift current for diode is 20 microampere. Option है 20 microampere, 4.996 volt, 0 ampere, 5 volt, 10 microampere, 2.5 volt, 0 ampere, 0 volt.
जो करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट is equal to drift current, 20 माइक्रोएम्पियर। जो करंट इन द सर्किट है दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप across 20 ohm resistance current into resistance. Current is 20 into 10⁻⁻6 ampere and resistance is 20 ohm. This comes 400 into 10⁻⁻6 volt or 0.0004 वोल्ट। जो पोटेंशियल ड्रॉप है across this resistor is 0.0004 volt. Total voltage supplied is 5 volt. So balance will be potential drop across the diode. The potential drop across diode (5 volt) minus potential drop across 20 ohm resistor 0.0004, 4.9996 volt. The current in circuit is 20 microampere and drop across diode is 4.996 volt. A is correct option. Question number 4. Each of the resistance shown in the figure has a value of 20 ohm. Find the equivalent resistance between A and B. This is 20 ohm, 20 ohm, 20 ohm, 20 ohm. This P, Q, R and S. So P by Q is equal to 20 by 20 is equal to R by S. It means this circuit is balanced, hence there will be no current through this. इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब P and Q are in सीरीज, तो इनका रिजल्टेंट सपोज R1, तो R1 इज इक्वल टू P प्लस Q 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 ओम। इसको R1 प्रोवाइड कर दें, इसको हम अब P एंड Q को रिमूव कर दें। Similarly, the resultant of R and S is R2. R2 होगा 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 20 इज 40 ओम। इसी तरह से हम इनको भी रिमूव कर दें।
अब P and Q, ये R1 and R2 are 40 and 40, and both are in पैरेलल। अगर इनका रिजल्टेंट S है तो 1/S इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/40 प्लस 1/40, 2/40 और 1/20। तो S की वैल्यू आ जाती है 20 ओम। तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। डी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 4. Find the current through the resistance R in the given figure if R is equal to 12 ohm and R is 48 ohm respectively. Option है 0.42 एम्पियर, 0.42 एम्पियर, 0.42 एम्पियर, 0.16 एम्पियर, 0.16 एम्पियर, 0.42 एम्पियर, 0.16 एम्पियर, 0.16 एम्पियर। तो फर्स्ट केस है, सपोज फर्स्ट केस R is 12 ohm, दिस R is 12 ohm। अगर हम सर्किट को देखें, इसको अगर नाम दे दें A, B, C, D, E and F। C और F की अगर हम वोल्टेज देखें तो C is at higher voltage and with respect to F, C is at higher potential with respect to F। Positive terminal of 6 volt battery is connected to C। It means ये जो डायोड है दिस इज रिवर्स बायस्ड। Hence no current flow in FEDC। अब सर्किट अगर कोई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I1 या I, दिस विल बी आल्सो I1। तो 12 into I1 minus 4 minus 6 plus 12 I1 is 0। पाथ हमने ले लिया AFCBA। जो लूप है AB 24 I1 minus 10 is equal to 0। तो I1 is 10 by 24 और 5 by 12, 0.42 एम्पियर। सेकंड केस लें, R is 48 ओम। जब R 48 ओम होगा, सिमिलरली दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड ये रिवर्स बायस होगा, डायोड 48 ohm। Suppose in this condition current is I। Loop AFCBA, AFCBA लूप लेंगे तो 12 I minus 4 minus 6
plus 48I is 0, 60I is 10, I is 1 by 6, 10 by 60, 1 by 6 और 0.16 एम्पियर। तो जब रेजिस्टेंस 12 ओम है तो करंट है 0.42 एम्पियर, और जब रेजिस्टर आर की वैल्यू 48 ओम है तो करंट है 0.6 एम्पियर। दिस बी इज करेक्ट ऑप्शन।